آپ اپنا आपका यकीनन जवाब देने का हक महफूज रखेंगे तो आप उस वक्त कर सकते हैं तो मेरे और आपने दलाइल लिख के भी दे दिए हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी फरमाइए। with my help of my two grandsons I was ये देखिए ये बात बिल्कुल गैर ज़रूरी थी। नहीं सॉरी ख्वाजा साहब मैं यहीं आपको टोक दूंगा। नहीं मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बातें। मैंने आपको अभी गुजारिश की है नहीं ये बातें ना करें by the help of my grandsons। ये क्या बात है? I was asked 20 questions. I have replied. जी हमने देख लिए हैं। I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. जी हम यही आपको कह रहे हैं कि आपको यकीनन मौका देंगे। And I have done that in my CMA 8252 of 2023. जी तो अगर किसी और को कोई इस पे एतराज़ नहीं है तो अटॉर्नी जनरल आगाज़ कर सकते हैं। एक शख्स एक वक्त में आके स्पीकर के सामने बात करें, दूसरे शख्स जरा जगह दे दें। योर ऑनर मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। माइक में बात कीजिए। योर ऑनर मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। आई हैव चैलेंज दी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और जो बिल चैलेंज हुआ इन दोनों को मैं अलहदा समझता हूँ क्योंकि बिल जो है उसको चैलेंज करना। अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपको इतराज़ है अटॉर्नी जनरल आगाज़ करें बात का हाँ या ना। सवाल आपने नहीं सुना था। हाँ सर वो कर लें तो फिर बस ठीक है यही पूछा ना। अभी और आप बहस ना कीजिए ना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इतराज़ है उनके बहस करने से तो फिर हम आपको पहले सुन लेते हैं। नहीं योर वन लाइन में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल को और अगर उसको अलहदा सुन दोबारा आपने बात शुरू कर दी वही। My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view, I think then he can. आप किधर से हैं? My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. तो आपने इसको अहमियत नहीं दी? No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. आप किसके लिए हैं? My lord, petitions. नाम बताइए किसके लिए? Mudassir Hassan, my lord. कौन है मुदस्सिर हसन? He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. किधर है दिखाएं उनको? My lord, today he has, my lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. हाँ तो देखिए ये तो अहमियत आप दे रहे हैं। एक दिन वकील नहीं है तो दूसरे दिन वो पिटिशनर इनको जितना शौक इस केस का नहीं है। My lord, because this was fixed. आप कितना वक्त लेंगे? My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my lord. नहीं नहीं मुख्तसर हाफ एन आवर वाले इतने लंबे नहीं मुख्तसर बात कर लें तो कर लें। अच्छा आप करना चाहते हैं और पिटिशनर की तरफ से कौन है? Of the same submission, I have a petition number 33. अगर आप प्लीज बता दें आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को ना? If I am allowed to argue first, my lord. अच्छा ठीक है कर लेते हैं चलें आ जाइए आप जी चौधरी साहब बताइए। CP20 सर। नहीं आप पहले बहस करना चाहते हैं? अच्छा आप किसके लिए किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? न्याजुल्लाह न्याजी पेटिशनर है मौजूद है। कौन है? वकील हैं? He is an advocate and former president of the Islamabad High चलो आप सीनियर हैं आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP20 में। CP20 I've already filed concise statement, my lord, and ठीक concise statement 20 एक से इनकी निकालने पिटिशन। concise statement is 8279, my lord. CP20. ये जी Lord, if I'm permitted, My lord, if I may, प्लीज Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I submit my चौधरी साहब अब आप पूरा ना पढ़िए हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें उस पर बहस करना चाहें तो कर दीजिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो
ओपनिंग पैरा है, अगर इजाज़त दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। तो आई वुड, मे आई मिनोड, बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not introduce words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. that is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 rules, Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with the separation of power theory. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord, so far as this Section 3 is concerned, my lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only
if the parliament had two-third majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the constitution, so whereas section 5 is concerned, until and unless there is two-third majority in the parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 239 of the Constitution, wherein two-third majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be most suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. My lord, overriding of all laws, section 8 I would read. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my lord, by law, constitution, as well as the precedent of this honorable court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the parliament, my lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated parliament, I must say, because it was not a parliament indeed which had to go into the amendment of the constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution petition 20 and page, my lord, I'll just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the constitutional court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely upon a news item, which may or may not be true. My lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the parliament, my lord. A question arose in certain proceedings before this honorable court in another case, and I think we submitted him even on the last day of hearing. Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the parliament, did you write to the speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not did me. you write to the speaker? No, my lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to. I'm asking you a simple question. You didn't write to the speaker. My lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Assembly Speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act
19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. But Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. brought certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, just Yeah, but, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. one thing I So must please say. argue your own case. Forget My Lord, what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case, it's not an individual's case, this is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items. Please, again which you may be relevant for have the assumed purpose. yourself, देखिए ये ना कीजिए. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the My nation. Lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for and two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights for that matter and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at if you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this. Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my Lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please this tell us what are those. many years ki, now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So तो that is why ये point आर्ग्यू कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में. पहले तो मेंटेनेबिलिटी की बात थी, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता कि ये एक्ट इटसेल्फ, ये जो इसकी बिगिनिंग है, ये जाहिर कर रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये इनैक्टमेंट की जा रही है. सो वी क्वेश्चन दिस इनैक्टमेंट ऑन दैट बेसिस. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the parliament. I'll be just referring to HISBA bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahib, if I may interject at this juncture,
हस्बा बिल का जो केस था, इस केस से ज़रा इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है, ठीक है। अब वो पहले फाइल हुई पिटिशन या बाद में फाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट का पहलू रखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया एक्ट पार्लियामेंट, तो ये इस पॉइंट को रहने दीजिए। हस्बा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था, ठीक है। तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन ऑन द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है, ठीक है। तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी ज़रूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया। अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता, फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन है तो बस आ गया। अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है, ये आइन से तसादुम रखता है। ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए। मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं। आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी। हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली माय लॉर्ड। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई दी area which is within the jurisdiction of this honorable court. Trichotomy जो है, that is being, as a matter of fact, negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, executive, parliament, and the judiciary. When the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality. Because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your ये जरा दे दीजिए। मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो केस था, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है। तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है। तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता, तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? देख सकती है, तो फिर ये आपका आर्गुमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही। नहीं, फिर आप आर्गुमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी। मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सर्टेन, नहीं वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात। अब आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے, فل سٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون بتا. میں یہ گزارش کروں اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. جی. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے, یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم وین دی certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون, کوئی پریسیڈنٹ, کوئی رول, کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی. جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک, جیسے انگریزی میں کہیں, اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس سے دفاع کرنا چاہیے کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ, عدالت کی آزادی, مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے, اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا, یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے, تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش یہ ہے, میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے, آپ کیا فرما رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے, نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے, آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں, ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں, ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی, ٹھیک ہے, یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجیے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے, نہیں, یہ میں آپ سے صرف سمجھنا, صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں, تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا, تو بس یہی ختم ہے, اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, نہیں نہ کیجیے نا, میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے, یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں, یہی تو میں عرض کرنے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेरे साथी ने मुझे रोक लिया, मेरे साथी ने मुझे ही रोक ये लिया। सारी बातें हो चुकी हैं पहले तारिक साहब के होते हुए, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे जवाब आ भी जाएंगे। आप अपनी जो पिटीशन है 20 उसके हवाले से आपने बता दिया कि फलां जो ये सेक्शंस हैं ये एटावारीज, यही कह रहे हैं ना? जी जी, उसके बारे में मुझको बताइए अपनी पिटीशन के हवाले से। अभी जवाबात की तरफ ना जाइए कि आप क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब, उसको छोड़ दीजिए, वो जवाब वो देंगे तो देख लेंगे। आप अपनी जो पिटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आर्गुइंग बिफोर अस, उसके बारे में बात कर लीजिए बस, ठीक है? मैं ये गुजारिश करूं कि बुनियादी तौर पर जो सवालात, जो पॉइंट्स मैंने एजिटेट किए हैं ये और जो सबमिशन का हिस्सा ही हैं, अगर इजाज़त दें तो ये मैंने इसको मुख्तलिफ जो इसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स हैं उसमें रखा और बात करके उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। कपल ऑफ पैरास फ्राम ए के ब्रोहिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुख्तलिफ हवालों से, अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आई बी जस्ट मेकिंग अ सबमिशन ऑन दैट। जजमेंट्स माय लॉर्ड, इफ योर लॉर्डशिप मे जस्ट परमिट मी, 2A के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका, वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये सारा, और ये इस सिलसिले में मैं PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 595 इसका सब हेड B है सर, पेज 596 एंड सब हेड M पेज 604, और उसके बाद 2015 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1739, इसका सब हेड जो है D है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड माय लॉर्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाज़त से, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी, 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, देन PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 and PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869। आइटम 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल में, लॉर्ड, शेड्यूल का हिस्सा है फेडरल लिस्ट का, लेजिस्लेटिव लिस्ट का, आइटम 55 जहाँ एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे तज़किरा है, लेकिन ये जो इनेक्टमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट के, मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल पर सलब किए हैं इख्तियारात और उसको अपनी गर्दाब में ले लिया है, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा। PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इसका सब हेड O है पेज 409 पे, सब हेड R है पेज 412 पे। ट्राइकोटमी पे सेपरेशन ऑफ पावर, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 265, इसका रेलेवेंट है
subhead A and C. Access to justice पे PLD 2012 Supreme Court, subhead C, पेज 1202. पेज कौन सा बता रहे हैं? PLD 2012 Supreme Court 923 sir. E subhead. Intents of the framers of the Constitution, ये judgment 1992 1992 Supreme Court monthly review 1202. इसका relevant subhead है C. Interpretation of Constitution approach in different judgments, where they say Constitution to be read as a whole, Natural. not one part. ये PLD 1999, Supreme Court, page 57. इसका relevant subhead है H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888. इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है, जी that's correct my lord. 888. जी इसका at page 905 subhead H. Already PLD 2015 Supreme Court 401 रेफर किया है. इसका सब C at page 598. And again, PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए. इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं, नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दे सब बड़ी मेहनत की आपने, जी आप माशाल्लाह. आपकी तवज्जो के लिए से. नहीं शुक्रिया. अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. ये पेज 14 ये पे पैरा 10 है. इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है. चलिए सफ़ा बता दें. 14A 14A. 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है. 14 के बाद 15 है. 14 ये मेरे पास नहीं है. ये पैरा 10 है, जरा देखिए. मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है. शायद रह गया हो. पेज 18 पे है ये, पेज 18 पे है ये, पैरा 14 इसमें जो बुक का है ये, फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. पैराग्राफ 10 मिसिंग है. आपने 14A इसमें रखा नहीं, मेरे वाली में पता नहीं, मेरे साथी के पास है. किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए. चलिए आप वो रह गया है, तो वो वाला जगह एक सफा रह गया है, ये मैं दे दूंगा. ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं. आप जरा माइक के करीब आ जाए. चलिए सब माइक के करीब. 27 पे. हाँ 27 है, पेज 23 पे. हाँ जी 23 पेज. जी फरमाइए. ये है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया.
The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर। 23 पेज पे लास्ट पैराग्राफ 23 और लास्ट पैरा ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है। ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं। The judiciary department proper power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislature power would be fruitless if the constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया 28 power to declare law unconstitutional. अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही ये जो अल्फाज का चुनाव है ब्रोई साहब का, द जुडिशरी डिपार्टमेंट मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़, जरा एक सेकेंड, द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट टू डिटरमिन वेदर अ स्टैच्यूट बी और बी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटरमिन। ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है। ये बिल्कुल वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। चौधरी साहब, मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा। चौधरी साहब आप मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट, उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया विच इज नॉट, और हम तो फिर आप चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे सामने। वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त, जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। जी दुरुस्त। क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? कि with the passage of time, definitely, what already flown under the bridges, I would not say so, because जितनी judgment उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958. जी जी. This book predates martial law. It was, I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct, It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूं, आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए। ये ब्रोई साहब पास नहीं है, ब्रोई साहब is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. ये अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इस्तिलाहात हैं। वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के, ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional law. वही से हमने as a matter of fact we calling regarding it, government capital G the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean
And these are not Roy Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so and so, Philadelphia. बुनियादी तौर पे उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चौधरी साहब, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. बट रोही साहब का मकसद यहाँ पे था टू एलैबोरेट द concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला बेसिकली हमारे पास इसका भी रेफरेंस दिया है. ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए. जी जी. पैरा 28 जो है, power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट. When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign that ordains and establishes the Constitution is the people. But this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is, and that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says
that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक सेक्शन है, वो आपने अभी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, अब ये an application pleading urgency or seeking interim relief shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may, some may say this is a quote unquote good thing. Question is, can the Parliament regulate Supreme Court down to this nitty-gritty level? Is this what independence of judiciary and separation of power is all about? इस पे जरा kindly हमें कुछ बताइए. My Lord, very respectfully, I just, since certain things were going on in a certain manner, I prepared this brief starting from the oath itself, my Lord. As a matter of fact, when we say that to preserve and defend and three words. इकराम साहब इकराम साहब Just उनको जवाब दे. इकराम मैं अपने प्लीज मदर साहब ये जवाब दे रहे थे मुनीर साहब से से. एक और चीज उसमें पूछ लूं. इकराम साहब ये इधर देख लीजिएगा राइट से आपके सॉरी ये आप 58 की जो बुक कमेंट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे जो आप बात कर रहे हैं तो इनके जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है. तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वालिशन है वो तो आप बताइए ना. वो तो ठीक है कमेंट्री है वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस and what is the ultra virus? You have to point out such articles in the constitution. उसके मुताबिक ये जो है अब आर्टिकल 119 है 191 है डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं उसमें आप बता दीजिए ना. मैंने ये केस बेसिकली इन ए हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा जी आपके सामने. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आता हूँ बट इफ परमिट में दिस इज द बेसिक कि द अल्ट्रा वायरस तो आप अपने आइन की शिकों से डिक्लेयर करवाएंगे ना. ये मैं गुजारिश करता हूँ अगर ये जो आपने फरमाया कि ये बेसिकली विल ऑफ द पीपल ये मैं क्यों कहता हूँ. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा वेरी रिस्पेक्टफुली लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं AR कार्निलियस साहब की एक देखिए 45 मिनट फ्रॉम द वॉच आपको मिल चुके हैं. अगर आपको सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आप सोच समझ के तहरीरी जवाब देना चाहें ये भी आपके पास मौका है. ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा जवाब दे दें बाद में ओहो बेहतर होता मैं ये कहता. तो आप ज़रा और भी वकील हैं, हम आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस भी हैं. इसको हमने इस ऊंट को एक किनारे लगाना है. सिर्फ एक 4 लाइनें मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी तवज्जो के लिए. तो बता दीजिए ना वो इसी में से कौन सा पेज है, सफ़ा बता दें पहले. ये लॉ एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान ये किताब उन्होंने लिखी जस्टिस AR कार्निलियस साहब ने. इसका चैप्टर 25 है सफ़ा 41 पे 41. Yes, sir. जी फरमाइए. AR Cornelius participated in the 3rd Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. ये ना पढ़िए ना, पढ़ देना जो बात नहीं, करने की है. ये अगली 4 लाइनें हैं. Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 कॉन्स्टिट्यूशन था 98 का उन्होंने हवाला दिया. अगली लाइनें सेंटर से मैं पढ़ूंगा. Added to this power given to the courts to pronounce upon the constitutionality of all laws, where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the Constitution,
it was liable to be invalidated. इस पे तो कोई राय भी नहीं हो सकती हैं। और हमारे साथी मजहर साहब ने आपसे सवाल पूछा कि वो बता देना कौन सी शिक का इनकी वायलेट हो रही है फंडामेंटल राइट की। करूं सबसे पहले मैं भाई साहब एक सेकंड जी। There are two questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question, whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are two different questions. One is of competence, second is of conflict. تو آپ ان کو علیحدہ علیحدہ بتائیے کہ جی کمپٹنس کیوں نہیں ہے، اور اگر کمپٹنس نہیں ہے تو دیٹ اینڈز دا میٹر، یو کین ناٹ ڈو اٹ. پہلی بات تو بٹ اف دیر از کمپٹنس دین وی لک ایٹ دی ادر ایسپیکٹ کہ آپ نے قانون پاس کر دیا بٹ اٹ is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے گزارش کی آرٹیکل 239 میں ایک چیز اگر if this case gets out of hand totally تو جتنا وقت آپ لیں گے دوسرے پٹیشنرز کا وقت میں پھر اس کو کرٹیل کروں گا. جی دیکھیے کہ آج کے بعد یہ کیس نہیں چلے گا، سوچ لیجئے. اب یہ نہیں کہ آپ بہت ہی باریکیوں میں چلے جائیں اور ہم آپ کو بالکل وقت دیں گے، مگر پھر آپ تیار رہیے رات تک بیٹھنے کے لیے آج کے دن. بسم اللہ. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسرے حضرات کو بھی وقت دینا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی دے ہیو دی رائٹ سر. میں گزارش کرنا چاہوں گا ویری پریسائزلی یہ جو اوتھ ہے اس کو میں صرف 3 لفظ ہیں، پرزرو کرنا، ڈیفینڈ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ اس کو میں ایک حصار قرار دیتا ہوں کانسٹیٹیوشن کا، کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے جو ایمبٹ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ چودھری صاحب دیکھیں وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، جیسے مائی لارڈ نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے، کہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، آپ نے سمپل 2 باتیں بتانی ہے. مائی لارڈ جسٹس اجلاس صاحب نے کہا کہ یہ کمپٹنس ہے پارلیمنٹ کا کہ یہ ایکٹ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے. آپ کے پٹیشن میں دیر از نو گراؤنڈ ان دس، کوئی آپ نے گراؤنڈ نہیں لیا کہ یعنی آپ کمپٹنس تو مان رہے ہیں آپ کے پٹیشن سے اظہار، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ از اگینسٹ دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن. سمپل سی بات ہے، اب یہ بتا دیں کہ یہ فلاں شخص سے کنفلکٹ کر رہی ہے، دیٹس آل. آپ اتنا لمبا نہیں سمجھ رہا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ 239 بذات خود بار کرتا ہے کہ اگر 2/3 میجارٹی نہیں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو کسی طرح سے بھی لیا نہیں جا سکتا. اب دوسری بات 39 پڑھ تو لیجیے کیا ہے 239 پڑھیے نا. میں پڑھ یہ تو بل ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے نا، لا بنانے. میں گزارش کرتا ہوں. A bill to amend the constitution may originate in the either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. یہ اس میں بنیادی طور پر جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم، کوئی بل موو ہی نہیں ہو سکتا. یہ لیجسلیٹو کمپٹنس جو ہے کہ پارلیمنٹ کمپٹنٹ نہیں تھی قانون بنانے کے لیے، کیونکہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے دس essentially requires a constitutional amendment which is a totally different species of laws and which requires a totally different procedure that the parliament needs to adopt. And that since that procedure has not been adopted, it can be argued that the competent
the Parliament was not competent to make this law, which has the effect of amending the Constitution. That's my lord. That's my submission. ये चौधरी साहब इस तरफ. My lord. As I see this law and its provision, all it does is to secure and ensure access to justice right. Is the Parliament not competent to legislate in relation to access to justice? Providing an appeal is access to justice. Even regulating the untrammeled powers of the Chief Justice is also as an element of access to justice. Is the Parliament not competent to legislate beneficially for the people? मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की हो तो फिर वो आप आइन की बात कर रहे हैं, वो आइन थोड़ी अमेंड हो रहा है, सिर्फ एक्सेस टू जस्टिस, मैं आपसे एक्सेस टू जस्टिस का पूछ रहा हूँ. मैं उसी तरफ आ रहा हूँ. Is the Parliament आर्टिकल 8 वो बार करता है. आर्टिकल 8 बाकायदगी से एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पाबंदी लगाई गई कि आपने इसको किसी तरह से भी मास्टर 2 एक्सेप्शन हैं इसमें कि इमरजेंसी में कुछ प्रोविजन सस्पेंड होंगी. वकील साहब, 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सबने पूछे हैं. एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे बता दीजिए और एक अल्ट्रा वायरिस पे बता दीजिए. और आप कहते हैं कि कॉम्पिटेंस है ही नहीं पार्लियामेंट की लॉ बनाने. पार्लियामेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट. एक हो गया. सबमिटेड माय लॉर्ड. बताएं तो सही कैसे कि पार्लियामेंट लॉ ही नहीं बना सकती. बताइए क्यों नहीं. इस वक्त वो बताइए, प्रोविजन बताए ना. नहीं है कॉम्पिटेंट. मैं आर्टिकल 239(3) That is amendment in the Constitution. That is amendment in the Constitution. Not about the law. अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं कि बेसिकली ये जो लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन एक तरफ तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग को मुकम्मल तौर पे रेगुलेट कर रही है. ये होगी. दूसरी बात सर, दैट आल्सो That is the effect, sir. That is the effect. आगे मैं अर्ज करूँ सर. इसके बाद मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अभी जब भी होंगे किसी तरह से भी, तो मैं ये गुजारिश करूँ कि वो किसी तरह से भी वो लेजिस्लेशन वैलिड नहीं होगी, वो अल्ट्रा वायरिस की कॉन्स्टिट्यूशन होगी. तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट ने वो तमाम चीज़ें जो उनके इख्तियार में ना थी वो उन्होंने कर दी. सो दैट इज द आर्गुमेंट. फर्दर मेरा ख्याल है मैं तहरीरी तौर पे भी सबमिट कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच सर. शुक्रिया बहुत बहुत चौधरी साहब. अब कौन से हसन इरफान आएंगे, दूसरे साहब आएंगे? कौन आ जाइए. आप करना चाह रहे थे, आप नंबर बता दीजिए जी. 19 है. It's Mudassir Hassan Jura. I have also submitted the submissions. It is CMA 8300, and there is another booklet that I was able to prepare today that I would be submitting during the course of the arguments. 19 निकलवा दीजिए जी. My Lord, I would, Your Lordship, the case law is very well known. I would not go into the case law details. I have mentioned arguments, but I would touch upon the broad-based thing, and I'm grateful to Your Lordship in saying that we have to go by the letter of the Constitution. The Constitution is very clear. I am confident that I may be able to convince Your Lordships that by reading the Constitution itself, we may be able to find an answer whether this is a valid law or it is not a valid law. So in essence, Your Lordship, the question that was asked is about legislative competence. Now, legislative competence has 2 parts, and in fact, in the we haven't asked you any question. My Lord? We haven't asked to the previous counsel. Go leave it for them. You argue your case as you want to. This is a legal question that I would say. It has a process, whether there is a legislative competence, and even if they have the legislative competence, whether the content of the legislation are within the framework of the Constitution. And then the third question, of course, in the light of
the provisions of Article 191 would apply, because 191, and I would like to read those provisions also, does not places a further requirement that even if a law is passed, your lordships have to implement that law, because it says, subject to constitution and law, the Supreme Court may make the rules. So that is something I believe is, which is something which is missing in the Constitution. However, Your Lordship, first of all, the maintainability questions, very briefly, there are 3 points which are relevant for maintainability. The first is that it touches upon the judicial functioning of the Honorable Supreme Court. Now, judiciary is one of the 3 pillars of the Constitution or the state, and therefore, if we go by mathematics, it covers around 33%, if not more. So that is a very substantial question. Please make some legal arguments. My Lord, that is... No, please, आगे बढ़िए ना. My Lord, 33%, what sort of argument is My Lord, this? because it touches upon one of the pillars of the Constitution. आगे बढ़िए, And please. if it's a fact that then आगे it affects. बढ़िए. My Lord, the second point is, of course, if your Lordship may see Article 50, if I may. 50? 50, my Lord. And these points, my Lord, I'm trying to show to your Lordship that there is a very serious questions which are to be considered. 50 defines the Majlis Shura. Can you what point you are making before we start reading something at My Lord, random? this is on the maintainability of the petition. There shall be a Majlis Shura, Parliament of Pakistan consisting of President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. Now, my Lord, the submission is that this bill was sent to the President for assenting. The President, as a part of the Parliament, raised an objection to this thing, and there was a press release. The President Please questioned... argue your petition. My Lord, that is... Which ground is this? My Lord, that is Where on have you the- stated this in My your Lord, my Lord, on the legislative competence, if your Where Lordship- have you stated all these things? Lord, this is an ये an हुआ elaboration. President did This this, is an elaboration of my arguments that your No, Lordship. no. You cannot argue something factual which we don't know about. My Lord, this is, I have a paper book that your Lordship would be submitting now, because there was a press release, and this is. फिर आप आ part गए of the press record. release पे. My Lord, I would, if your Lordship is not convinced on that, I would. I mean, it's skip not a that, but question of that is- convince. I don't think it's any sort of argument. My Lord, the reason why I'm submitting this is that even within the Parliament itself, there is a dispute whether this law could be passed by the Parliament, because the presidential. अच्छा, suppose we agree or disagree, what difference will it make? My Lord, because it would give your Lordship the thing that this is a very serious matter which has to be considered by your Lordship, because the Parliament itself is debating and discussing whether they have the legislative power or not. And President is the head of the Federation. So when the President is saying, and part of. He told you. He told you. My Lord, it is the record, my Lord. No, no, which record? My Lord, Before this is us? the press release issued by, my Lord, this is. No, before us, which page is it? My Lord, If he's told you something privately, well, that's good for you. My Lord, this is the paper book that I have prepared. for Don't. your Lordship. अब आप बताएं ना रिकॉर्ड पे रखिए बताएं ना ये आप नहीं हम कुछ नहीं लेंगे आपसे ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का My Lord, ये अभी नहीं हम नहीं अभी, my लेंगे Lord, सॉरी record ये हुआ बिल्कुल था। My Lord, जो मर्जी आप अगर कोई लीगल आर्गुमेंट दे रहे हैं कोई बुक से कॉपी दे रहे हैं जैसे चौधरी साहब से सीखिए उन्होंने बुक्स का हवाला दिया जो उन्होंने my मुंजमद Lord, कर वो दी मैंने 3-8. इरफान साहब प्लीज आर्ग्यू द My केस Lord, my Lord, I would go to 184. जी And my Lord, the relevant grounds I have mentioned, they are starting on 184, is starting from page 8 of the paper book, the submissions that I have made. Your Lordship, if with your permission, I would start the wordings of 1843, my Lord. My Lord, the relevant part is
without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights referred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. The legal submission is that this provision of 1843 is not beginning with subject to Constitution or subject to the law. This is an open-ended, wide provision, which even when we compare it with Article 199, 199 is subject to the Constitution, and it permits only an aggrieved person to bring out a petition. Whereas 1843 does not places any restriction that a person who comes to this honorable court be an aggrieved person. In Lordship, the second important point on reading 1843 is that it talks about the Supreme Court shall. This is a mandatory requirement that it is the Supreme Court by itself, whereas the legislation that we have challenged has provided for a committee to decide whether they're so. In essence, what the law is doing, the law is replacing as a first step the Honorable Supreme Court's function and transferring it to a committee which may not even be considered as a judicial function. That would be an administrative function. And the third condition of 1843, or the power... Are you, just clarify this, are you contending that individually Chief Justice of the Supreme Court cannot invoke this power, and this power vests exclusively in the Supreme Court, which means the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court? Clarify this. Lord, what are you saying? My Lord, that to that, my Lord, 191 gave the power of... जवाब दे रहे हैं, अब दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं. My Lord, no, my Lord, I'm coming to that question because that is relevant. In the context, it's relevant. My Lord, the power was to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court sat down, they made the rules. And all the judges, the Supreme Court, then delegated their own power as a whole to the Chief Justice through the rules. So that is... कहाँ लिखी है ये बात? My Lord, that is in the rules, my Lord. Whether the Supreme Court can grant the power assigned to the Supreme Court in the Constitution to someone in the Supreme Court, say to the Chief Justice or to the Senior Attorney or to anyone. Can this be done? That is delegation of power का that is the delegation of power. कौन सा rule है? Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My Lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My Lord. Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to 2 more judges, a committee of 3 judges. Yes, my Lord. अब इसमें अगर वो delegation का element है तो yes, in exercise of administrative powers, the court can delegate some of the powers to one of the judges, be it the Chief Justice, be it a committee, be it 4 judges, be it 6 judges. That power has been exercised under Article 191, which is a constitutional mandate. Absolutely. So where a constitutional mandate empowers the Supreme Court to make rules, those have a certain sanctity attached to them. My Lord, we have to also see what is the Constitution mandate as a whole. The Constitution itself recognizes this principle of delegation of powers. Even the Parliament has the parliamentary parties. The function, certain functions like the law-making function is delegated to the select committees or the thing. So that also works in the company law also. That is, I think, one of the fundamental principles of law as a whole, that the powers can be delegated to another person or within that body.
So that is what my submission is. This is not a तो ये delegation of power. मैं ये सब This is not a delegation of power. ये तो Chief Justice along with 2 members of the bench or the Supreme Court will make the Your Lordship, cause list or the benches. that is- Chief Justice has himself not delegated any power to the other 2 judges. Then So the- this is not the case of delegation. Then the question would arise that the Supreme Court delegated the power to the Honorable Chief Justice. Now, whether this Honorable Supreme Court itself as a whole can draw or replace those powers, or the Parliament can do that. Is The it your Parliament cannot do argument- that. Is it your argument that Article 191 does not delegate this power to the Parliament? To the Parliament, absolutely. In order to shield the working of the Supreme Court, Article 191 specifically says the Supreme Court would make its rules. And my lord, Now, what if one were to flip the argument, what prevents the Parliament from making a law to say, okay, matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. Aye? Would be determined by the Parliament. My lord. I mean, अगर My lord, उनके then it- पास अगर legislative competence है, तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? Lord, My that- question to you is that. My lord, my answer very quick. If I may add to that, just add to that, what if Parliament makes a law saying that all of these things which my learned colleague has specified, the power to that is delegated to the federal government? Yes. My lord, There is no end to it. Then their separation of powers becomes a completely illusory concept. Whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. Well- And learned Attorney General told us that in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if this power vests in Parliament is the federal government banayegi rules. my lord, if I may, I mean, there is then no end to there it. is no end to it, but if I may jump my arguments, I made them systematically. नहीं This- आप आर्ग्यू करें जैसे आपको करना है कितना वक्त आप लेंगे My lord, if your lordship go uninterrupted, maybe आप- half an hour. my lord. ठीक है हम आप वापस आते हैं My lord. ये learned counsel एक question जो है वो ज़हन में रखिए. Again, I will reiterate, this is a law that ensures access to justice, whether it's the appeal, and also secures, promotes the internal independence of the judiciary. So is the Parliament not competent to do that? I will answer you चलिए very वापसी में आते हैं हाँ